Hello everyone, welcome to Nirja Education. Today I am going to start the second chapter of civics of class 8, that is ideals of our constitution. So first we will talk about the Constitution of India. What is a constitution? Constitution is a book of law which the country, a democratic country is following. Constitution क्या है? Constitution एक book है जिसमें सारे laws लिखे गए हैं और उसी लॉज के बेसिस में हमारी कंट्री रन करती है. मीन्स वी आर वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स elected a popular elected representative are there in constituent assembly and they have adopted the constitution of India on 26 November 1949. means कॉन्स्टिट्यूशन किसने अडॉप्ट किया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मीन्स द इलेक्टेड और पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव adopted our constitution of India on 26 November 1949. However, it came into the effect on 26 January 1950. So it was adopted in 1949 but it came into the effect on, मतलब कब से अप्लाई किया गया? On 26 January 1950. Why this day was selected to apply the constitution? Because a day selected for its historical significance. At the Rahul session of the Congress in December 1929, it was decided that 26 January will be celebrated as a day of Purna Swaraj, that is complete independence. Means it is actually decided that Purna Swaraj मतलब complete independence इंडिया को कब मिला? On 26 January. So because of that reason our constitution came into the effect on 26 January. So they chosen this day because on that day only they got complete independence. So when India became independent on 26 January was chosen as a day to declare India as a republic. So India को on 26 January को पूर्ण स्वराज मतलब complete independence मिला था. Because of that reason only our constitution came into the effect on 26 January. And this day was declared India a republic. A republic means fully freedom होना. People के पास freedom होना to elect their representative and representative have also right to work according to the constitution. Now we will see the features of our constitutions. What are the features of our constitution that we are going to discuss? Our constitution of India is the longest and the most detailed constitution of the world. Means if we compare our constitution with the other country, then our country's constitution is the very longest and even most detailed constitution of the world. जो और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है हमारी कंट्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. बट टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन आवर फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं दे हैव स्टडीड एंड इनकॉर्पोरेट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स जो हमारे फ्रेमर है, हमारे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया को, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको डिटेल में स्टडी किया. डिटेल में स्टडी करने के बाद दे हैव पिक सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंट्री. मीन्स अलग अलग कंट्रीज के जो बेस्ट फीचर्स होते हैं दे टुक दैट फीचर एंड इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया. दैट मीन्स उन्होंने सभी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और जिसमें भी बेस्ट फीचर्स उनको मिला, सभी कंट्री में से जो बेस्ट फीचर उनको लगे वो उन्होंने अडेप्ट किए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें लिखा गया है, मतलब उन्हें डाला गया है. सो टू गिव द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर पीपल, टू आवर कंट्रीज पीपल, दे हैव स्टडीड एंड इनकॉर्पोरेटेड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो फ्रॉम दैट which feature they took that we are going to see now. First one is the fundamental rights and the federal form of a government were adopted from the constitution of the USA. हम जो अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स? देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए टू द एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. तो ये जो फंडामेंटल राइट वाला जो कंसेप्ट है दे टुक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. जो हमारे फंडामेंटल वाला जो राइट्स है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो सभी सिटीजन को दिए हैं, दैट फीचर
took from the Constitution of USA. And even the federal form of a government, when there is a 2 or more level of a government, it is called federal form of a government. So that feature also took from the Constitution of USA. हमारे कंट्री में भी हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग 3 लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट. सो हमारी कंट्री भी फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है एंड दिस फीचर इज टू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. क्लियर? नाउ द सेकंड इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स कुछ भी जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जो भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद लिए जाते हैं. तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड इवन द प्रेसिडेंट का भी अप्रूव चाहिए. तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. तो ये सिस्टम पहले हमारे कंट्री में नहीं थी. तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट की? यूके. This feature is taken from the Constitution of UK, and even the single citizenship was adapted from the Constitution of UK. Now, what do you mean by the single citizenship? Means अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया के पीपल हो, तो आपको एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी. यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है. मतलब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया का भी सिटीजनशिप मिलेगा, और अगर कहीं दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का भी सिटीजनशिप मिलेगा, ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा. कुछ कंट्रीज में ऐसा फॉलो किया जाता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है, बट इन अवर कंट्री वी आर फॉलोइंग ओनली सिंगल सिटीजनशिप एंड दैट ऑल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके. सो फ्रॉम यूके वी टूक पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम. Now the third one is the directive principle of the state policy. Now what do you mean by the directive principle of a state policy? Directive principle of a state policy means it will work for economic, culture and political program to make modern and welfare of the state. मतलब state के welfare के लिए economically और social और political programs बनाया जाता है. That is called the directive principle of the state policy. And now this was adopted from the Constitution of Ireland. सो ये भी हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में से ये कंसेप्ट हमने उठाया है. दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी. नाउ द लास्ट वन इज द 5-year प्लान एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो 5-year प्लान, हमारे यहाँ पे 5 year के बाद तो इलेक्शंस होते हैं और न्यू रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है. सो 5-year प्लान एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द former of USSR. So these are the features of our constitution which took from the different part of the world. For an example, UK, USA, Ireland, USSR. So this some of the feature we have seen that is taken from the other parts of the world. We adopted constitution at 1949. ठीक है, हमने कब अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को? 1949, और it come into the effect on 1949. But after that so many changes happened, so many things happened. मतलब बहुत सारे changes आए, severe changes came in our country. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 को बन गया है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं. तो दैट चेंजेस ऑल्सो मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे. वी हैव टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो हमारा जो 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन था और अभी का जो है उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, और कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत भी है बिकॉज 1949 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो अभी मतलब हो रही है और हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बताया नहीं है. तो सो वी नीड टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अभी की सिचुएशन के मुताबिक हमें कुछ चेंजेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में लाने पड़ेंगे. नाउ दिस चेंजेस इज मेड थ्रू, ये चेंजेस जो हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट. द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट. नाउ अमेंडमेंट तो हम लोग लाएंगे, बट कैसे लाएंगे, कौन डिसाइड करेगा कि क्या चेंजेस लाना है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा? तो दैट विल बी डिस्कस इन द 2 houses ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा. दोनों एग्री हो गए कोई एक्ट बनाने के लिए, और दोनों एग्री होने के बाद भी इट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. मीन्स जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो होगा उसका भी अप्रूवल चाहिए टू मेक द एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
means if you want to make an act or any provision in the constitution, you need to take the permission from the both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and even the president of the country. Changes that occurs in the constitutions are called amendment. Amendment means changes. So an amendment can be defined as a change in the provision of the constitution through an act. ठीक है, so ये changes जो आता है through an act, it is called amendment. Again, अगर आपको पूछा जाए what is amendment, then you have to write amendment can be defined as a change in the provision of the constitution through an act. Now when our constitution was adopted, that is in 1949, जब हमने adapt किया, at that time we have 395 articles and 8 schedules only. मतलब जब हमारा constitution बना, at that time we have 395 articles and 8 schedules, but now we had 448 articles and 12 schedules and over the 100 amendments, that means changes. Over मतलब 100 से भी ज़्यादा कुछ amendments आए हैं और हमारे जो articles हैं present, that is 448 and schedules are 12. So these are the features of our constitution. Now we will talk about the preamble. The preamble. What do you mean by the preamble? The preamble is an introductory document which explain the goals of the government. ये एक introductory document है जिसमें goals, government के goals क्या है वो mention किए गए हैं, वो explain किए गए हैं. Even कुछ text book के आगे आप लोग ने देखा होगा first page होता है, जो introductory page होता है first page, उसके बाद आप preamble देख सकते हो उसके पीछे. Preamble बना हुआ है हमारे country का. In some of the textbook you will found that. So what is the preamble? It is an introductory document which explains the goals of the government. It states the aims and the objective of the constitution. मतलब constitution क्यों बनाया गया है, उसके aims, उसके objective क्या है, वो ये preamble में दिए हैं. You can see that picture of the preamble. Now a careful study of the preamble reveals that it is the people of India who are stating their aims and giving power to whom? To themselves. That means careful मतलब अगर हम preamble देखें वो क्या रिवील करता है कि हमारे जो people हैं इंडिया के वो उनके aims who are stating their aims and giving power to themselves. किसके लिए है? For the people. So every government must keep the main principle of our constitution in the mind while framing the laws. मतलब laws बनाने के पहले जो some of the principle है constitution के वो उन्हें mind में रखने चाहिए. The principle of our constitution we will discuss in our next video. So for that you have to watch part 2 of this chapter. Thank you for watching video. Please subscribe to our channel Nirja Education and don't forget to press bell icon.